Lawyers are the men who hire out their words and anger. Hello guys, welcome back with another video at the Legal Entertainment channel. Guys, today I'm going to discuss about a case law which is regarding a mental harassment and abatement of suicide. Reprimanded by a PTI teacher for indiscipline of student can be said as mental harassment. कोई PTI टीचर किसी बच्चे को उसके इनडिसिप्लिन एक्ट के लिए डांट देता है या फटकार लगा देता है, तो क्या वो डांट या क्या वो फटकार मेंटल हैरेसमेंट के एम्बिट में कवर अप होती है? नाउ second question is, if a student commits suicide in consequences of a scolded by a physical training teacher, then the said teacher can be held liable for the abatement of suicide. उसी डांट डपट की वजह से वो बच्चा सुसाइड कमिट कर लेता है या उस डर की वजह से कि कहीं उसके पेरेंट्स को टीचर शिकायत ना लगा दे, उस डर की वजह से वो बच्चा सुसाइड कमिट कर लेता है, तो क्या उसी टीचर को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए लायबल ठहराया जा सकता है? And a very famous phrase is spare the rod and spoil the child. Is this phrase on a brink of extinction these days? So guys, today I'm going to discuss about these questions with a relevant case law of Supreme Court of India, which is regarding the mental harassment and reprimanded by a physical training teacher to a student. And in the consequences of reprimanded by a physical training teacher, the student commit suicide, whether that teacher is liable for abatement of suicide or not. Geo Varghese versus State of Rajasthan and another, whether a student is simply reprimanded by a teacher for an act of indiscipline, किसी टीचर के द्वारा बच्चे को सिर्फ डांटा जा रहा है उसके indiscipline act के लिए, and bringing the continued act of indiscipline to the notice of principal of institution who conveyed to the parents of a student for a purpose of indiscipline and correcting a child. Any student who is very emotional or sentimental commits suicide. PTI टीचर ने किसी स्टूडेंट को डांटा उसके इनडिसिप्लिन एक्ट के लिए, तो कैन दी said teacher be held liable for the same and charged and tried for the offense of abatement of suicide under 306 IPC? Supreme Court held that no, appellants hold a post of teacher and any act done in discharge of his moral or legal duty, उस टीचर की moral or legal duty है, without there being any circumstances to even remotely indicate that there was any intention on his part of abatement, the commission of suicide by one of his own pupil, no mens rea can be attributed. Thus, the very element of abatement is conspicuously missing from the allegations levelled in the FIR. In the absence of element of abatement missing from the allegations, the essential ingredients of offence under 306 IPC do not exist. High Court, while mechanically dismissing the petition under 482 CRPC on the ground that FIR discloses the commission of cognizable offense, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये अपील अलाउ की थी. हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रिवर्स करते हुए ये कहा कि नो, दैट टीचर शुड नॉट बी लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड मेंटल हैरेसमेंट. Reprimanded by a PTI teacher is not called as a mental harassment for a student. Now, the phrase is spare the rod and spoil the child. An old saying may have lost its relevance in present days, and corporal punishment to the child is not recognized by a law, but that does not mean that teacher or school authorities have to shut their eyes to any indiscipline act of a student. It is not only a moral duty of a teacher, but one of legally assigned duty under Section 24, Clause E of Right of Education to Free and Compulsory Education Act 2009, to hold regular meetings with the parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to learn, progress made in learning, and any other act or relevant information about the child. नाउ गाइज, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका ये यहाँ बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि बच्चों को स्कूल में मारा पीटा जाना चाहिए. इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है स्कूल में, तो उस बच्चे को डांटना चाहिए, जरूर डांटना चाहिए, उस बच्चे को समझाना चाहिए. अ स्टूडेंट हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द प्रीमाइसेस और इन अ इंस्टीट्यूशन. नाउ next is, if a student is simply reprimanded by a teacher for an act of indiscipline and bringing the continued act of indiscipline to the notice of principal of institution who conveyed to the parents of a student for the purpose of school indiscipline and correcting a child. कोई टीचर बच्चे को डांट रहा है और उसी indiscipline act को वो प्रिंसिपल सर की नॉलेज में ला रहा है
कि इस बच्चे ने ऐसा ऐसा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, और प्रिंसिपल सर बच्चे के घर पे उनके पेरेंट्स को फोन करके बोलते हैं कि आपका बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, या ये इस तरीके से सही किया जाए, बच्चे को समझाया जाए। एनी स्टूडेंट हु इज वेरी इमोशनल और सेंटिमेंटल कमिट सुसाइड, अगर कोई बच्चा इमोशनल और सेंटिमेंटल है इस वजह से कि उसके पेरेंट्स को शिकायत लगाई जा रही है उस बच्चे के रिगार्डिंग, तो वो सुसाइड कर लेता है, तो क्या उस टीचर को मेंटल हैरेसमेंट या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड रिवर्स द सेड डिसीजन एंड सेड दैट कंसीडरिंग द फैक्ट्स दैट अ appellant holds a post of a teacher and any act done in discharge of his moral or legal duty without there being any circumstances to even remotely indicate that there was any intention on his part to abet the commission of suicide by one of his own pupil, no mens rea can be attributed. Thus, the very element of abatement is conspicuously missing from the allegations leveled in the FIR. In the absence of element of abatement missing from the allegations, the essential ingredient of offense under 306 IPC do not exist. So thank you so much guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।